Hello, dear students. Welcome to the class today. Children, how are you all doing? Yes, hope you all are doing fine. So, we are carrying on with this geography chapter, chapter 1. A lot of points that we have discussed. Every time I'm telling you, it is very important, not only from geography point of view, but from GK point of view. The size and location of India is of importance because you should know that the country you are staying in, how far is it extended, and what are its area. It stands at what position? Yes, you know it very well. It is the seventh largest country in the world, India. So many countries in the world, usme being in seventh position is a matter of pride. Then, historically and geographically also, we are very well known in other parts of the world as well. People in the other parts of the world, all over the world, recognize our physical beauty. Physical beauty, please understand. In the last class also, we had discussed that we have ocean on the one side, on the other side, we have on one side we have ocean, on the other side we have mountains. We have, if you want to go to forest area, go to the northeast. You want to enjoy the desert area, go to the Rajasthan. So all these physical features, varied physical features, have made India one of the most beautiful countries of the world. Got it? So this is what I wanted to tell you. Now, in the last class where we have stopped, we have understood the latitudinal and longitudinal extent of India. Latitudinal is from Gujarat to Arunachal Pradesh, and longitudinal is from Kashmir to Kanyakumari. So, latitudinal extent is less in comparison to the longitudinal extent. Matlab, from north to south, we have 3,214 kilometers of length, and from west to east, it is 2,933 kilometer. So, these numbers you need to remember, that the longitudinal extent of India and the latitudinal extent of India. Got it, children? Now, the another important thing that we started is that India is very well connected to all parts of the world. आज की बात नहीं है. This is mentioned in Ramayana, Upanishad, all kinds of historical and religious texts that we have. जितनी भी पुराने documents हैं हमारे पास, everywhere it is mentioned about the country India. In some or the other manner, we come to know that historically India is one of the most important countries in the world. There is influence of Greek sculpture, architectural style of Rome. Matlab, we have been taking the ideas from the other countries and giving our ideas to the other countries as well. In all the ventures, in all the extent, when we see, we find India at a very powerful position, and nobody can challenge the strength of India and its extent. And yes, the security of the country is very important. Now, what we are understanding is the next topic, which is going to be most important topic: India and its neighbors. अपने बारे में पता होना चाहिए एंड अपने पड़ोसियों के बारे में भी पता होना चाहिए. राइट? व्हाट हैपेंस इज, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर नेबर्स, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी नेबर्स के ऊपर या हमारे ऊपर, तो देयर नेबर्स आर देयर हु आर द फर्स्ट वन टू हेल्प. जब रात रात में कभी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले पड़ोसियों के पास जाते हो, फिर रिश्तेदार तो बाद में आएंगे. योर रिलेटिव्स विल बी कमिंग एट अ लेटर पीरियड, but the first one to approach you, the first one to reach you are your neighbors. So we need to understand India has got 29 states and 7 union territories. 7 union territories नहीं, अभी तो 9 union territories हो गया है. The book has got the old information.
which is the smallest union territory, which is the largest union territory. ये सारे कुछ जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अब सबसे पहली चीज जो है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज ठीक है. From each side we have to understand who are the people surrounding us, which are the countries surrounding us. So we have Pakistan, Bangladesh. Okay, Pakistan and Bangladesh कहाँ पे है? Northwest. Pakistan and I'm sorry. Pakistan and Afghanistan in northwest. Directions समझने की कोशिश जरूर करना. Got it? Because if this is India, okay, so this is northwest. Our immediate neighbor is Pakistan, and after that is Afghanistan. Then you have China, Nepal, and Bhutan in the north. This is north. China, Nepal, and Bhutan in north. Got it? China, Nepal, and Bhutan in the north side we have, and Myanmar and Bangladesh in the east. This is east. So Myanmar and Bangladesh in east. Got it? So you can see, you can understand the immediate neighbors who are there. Southern neighbors across the country. साउथ में क्या है? साउथ में तो there is sea all around. चारों तरफ sea है. तो साउथ में we are sharing with our boundaries with two countries. South, we share our boundaries with, yes, Sri Lanka. एक तो आपको पता ही है, Sri Lanka and Maldives. Got it? So in south, when we are sharing our boundary with Sri Lanka and Maldives, Sri Lanka क्या है? It is separated by a narrow channel. थोड़ा ज़्यादा दूर है through sea. When we go to Sri Lanka, it is a bit far off country and separated from India by a very narrow channel of sea formed by Pork Strait. It is called as Pork Strait and Gulf of Mannar. Sri Lanka is separated by Pork Strait and Gulf of Mannar. Yes, sir, these are, again I am telling you, GK point of view, very important. Gulf of Mannar. So the neighboring countries that we have, and what are, because small pass is there, see, narrow channel is there, which is called as Pork Strait. Directly हम श्रीलंका नहीं पहुंचते हैं. It's quite a long distance that we reach Sri Lanka. And beach का जो area that is there, the middle portion that is there, that is where is the Pork Strait. एकदम आप I will be showing it to you in the map. Okay, it has a
We have very strong links with our neighbors. Neighbors के साथ we had a very old link. Um, India stands very different and very apart from the rest of Asia. Whole Asia का location जो है उससे India is standing in a very different area and in a very different manner. With the because location, when we are understanding neighbors, when we are understanding, we need to understand कि how are we connected to all of them. इनके साथ हमारा connection कैसा है, this we need to understand. Then children, you have the exercise portion. Yes, we have completed this chapter. This is a very small chapter where we talked about India and the neighbors. सारा कुछ आपको इंडिया के बारे में पता चला. And it is yes, students, it is general awareness, it is general knowledge, and here we come to end of this chapter. लेकिन यहाँ पे I have to discuss the second chapter along with this first chapter. Why I am saying it is because second chapter and the first chapter are connected to each other. Got it? ये काफी ज्यादा connected हैं, काफी connections हैं. कनेक्शंस किस तरह के हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगी. फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग ओनली द फिजिकल फीचर आउटसाइड एरिया ऑफ इंडिया फ्रॉम डिफरेंट एंगल, फ्रॉम सेपरेट एंगल, ये हमने समझने की कोशिश की है. The second chapter that I am talking about, this second chapter is talking about the internal physical features of India. Internal physical features, children, we need to understand. मैंने बताया आपको कि ये एक साथ ही connected है. So that's why we need to understand both these chapters together. Got it? अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने पढ़ा about the outside boundaries and just the latitude and longitudinal extent, and in world what is the position of India. अब हम पढ़ेंगे इंडिया का इंटरनल फीचर्स. सो आई हैव टू कंप्लीट, एक्चुअली आई हैव टू डील विद दिस चैप्टर. साथ के साथ में ही इसको कंप्लीट करना पड़ेगा बिकॉज both the chapters are connected to each other. Got it, children? That's why I am starting this chapter. Yes, I will be discussing the question answers of the first chapter as well, which is talking about physical features of India. Got it? It goes hand in hand. It has to be done together. एक साथ ही इसको करेंगे तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इंडिया को आपको पता ही है, वास्ट कंट्री, बेरिड लैंड फॉर्म्स. हम किस तरह की जगह पर, आप सपोज वी आर स्टेइंग इन वाराणसी, व्हाट काइंड ऑफ अ लैंड फॉर्म डू वी हैव? Yes, children, in Varanasi that we are staying, this is a plain land. This is a plain land. यहाँ आपको पहाड़ नहीं नजर आएंगे. Can you find mountains here? Can you find plateau here? No. This is a plain area which is drained by Ganga. गंगा की मट्टी से ही ये सिटी बनी है. And Ganga is the most like the life of the city. That is there. तो आप जिस जगह में रहते हैं उस जगह के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है. सो आई शेयर इट विथ यू. अगर आप प्लेन, हम तो प्लेन में रह रहे हैं, तो वी नो इट वेरी वेल कि व्हाट इज द स्ट्रेच ऑफ द प्लेन लैंड, कहाँ तक ये प्लेन लैंड एक्सटेंडेड है. वी नीड टू नो इट प्रॉपरली. एंड हिली रीजन है, रग्ड टेरेन है. हिली रीजन में बहुत रग्ड टेरेन, उबड़ खाबड़ बहुत होता है ना, ऊंचा नीचा, पथरीली जमीन, सारी चीजें होती हैं. तो माउंटेन्स आर देयर, वैलीज आर देयर. दीज आर दी common features of these areas. And हमारी country में, especially in our country, all major physical features are there. I told you that we are very lucky in that we have got all the physical features: mountains, plains, desert, plateau, island. We are lucky to have
all kinds of landforms. क्या क्या है हमारे पास? माउंटेन्स हैं, यस, क्योंकि this kind of varied physical features are hardly available in any country of the world. Believe me, children. Mountains, plains, desert, plateau, and islands. Ah, we have clearly got two islands also. अंडमान एंड निकोबार भी हमारे पास है, एंड वी हैव गॉट ऑन द अदर हैंड वी हैव बे ऑफ बंगाल में वी हैव अंडमान एंड निकोबार, एंड दूसरी तरफ में the island countries, island states that are there are very important. ठीक है, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज, ये सारा जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि कितने वी आर सो लकी. इट इज अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशन वी हैव. Geologically, when we study the landforms, we find peninsular plateau is one of the ancient land masses on the earth's surface. Peninsular plateau is one of the ancient land masses on this earth. Got it? अब peninsular plateau, ये जो ये this is called as peninsula. The area which is surrounded, this is Arabian Ocean, this is Bay of Bengal, and this is Indian Ocean. This plateau region कहते हैं कि अर्थ जब बना, when the earth was formed, at that time only this land was formed. This peninsular plateau. Yes, children, believe me, that is there. And northern plains are the most recent landforms. ये तो peninsular plateau हो गया. Northern plains are most recent landforms. Recent means some lakh years or 2 lakh years back. Yes, recent, because earth is crore years old. And तो आप ये समझ लो कि ये लैंड मास जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू दैट इज देयर, it is lakhs crores of years old, and the northern plains are recent landforms. Whole mountain system of India is representing a very youthful topography with high peaks. ठीक है, northern plains recent landform that has been formed with the flowing of rivers, with the flowing of with the different kind of land terrain, the silt that is brought by the Ganga, the deposits that are there, the alluvial soil, the khadar and the bhangar. Yes, you will be studying about it in the coming sections, coming paragraphs. And सबसे important जो हमारा है, that is the mountain system of Himalaya. Okay, ये जो Himalayan region है, it is representing very youthful topography. Represents very youthful topography. Got it? क्या क्या है यहाँ पे? High peaks are there, deep valleys are there, fast flowing rivers. There are high valleys, high peaks,
देखिए ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं, देन इसके वजह से देयर आर डीप वैलीज, ओके, एंड फ्लोइंग रिवर्स, काफी सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। माउंटेन एरिया, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू which happens to be one of the most oldest plateau of this earth, इस धरती का सबसे पुराना सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड यहाँ पे वी हैव लॉट ऑफ igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट्स वेरी ओल्ड ना, तो वहां की जो जमीन है, वहां की जो धरती है, वो उसी टाइप में है। इट इज मेड इन दैट फॉर्म ओनली, प्लीज अंडरस्टैंड। पेनिनसुलर प्लेट्यू has got igneous and metamorphic rocks. Igneous and metamorphic rocks. बहुत पुराने हैं ये। These kind of rocks you hardly find anywhere, जहाँ पे हल्के हल्के hills हैं। There are small hills. There are no mountains in south. South में you don't find mountains with small hills, छोटे छोटे hills हैं and wide valleys. It's beautiful. साउथ में some of the places are beautiful like Ooty. Ooty तो is said to be one of the most beautiful places in India. Got it? So here I'm stopping the second chapter. We have started the second chapter, the physical features of India. Lot of discussions we will be having. अब कहाँ पे कौन सा landform है, we will be discussing it in the next class, children. Right now I need to discuss the question answers of chapter 1. Okay, children? Come, let's discuss. So students, as you know, we have completed chapter 1 and we have to discuss the question and answers. We have also started chapter 2. Got it? We have started chapter 2, but then I needed to discuss these question and answers. So I have taken out these questions where I would be discussing the major points with you, which is talking about first question that is there is in the form of MCQ. This is an MCQ question. Tropic of Cancer does not pass through. देखो, a tropic of Cancer is passing through many states. हाँ, देर आर मेनी स्टेट्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आ रहे हैं। मेजर जहाँ मैं गई थी वो दैट वाज भोपाल, ओके, बट इट इज़ ऑल्सो पासिंग थ्रू। आप उसको जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हेन यू सी ऑन द मैप यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट थ्रू विच स्टेट्स इट इज़ गोइंग। इट इज़ गोइंग थ्रू राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा। मैप में इसको चेक करना पड़ेगा, वंस चेक इट इन मैप, because this is an enhancement to your knowledge when we are understanding it in this manner. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको बताना है कि इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओडिशा। ओडिशा थोड़ा नीचे है, एक्चुअली इट्स अ बिट लो towards the south side, that's why it is not passing through Odisha, otherwise it is passing through all these states, okay. The easternmost longitude of India is, yes, now this is what सबसे ईस्ट में ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ओके। ये इसी तरह के ऑप्शंस आएंगे आपको। यू विल बी गेटिंग सच कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, इसलिए जस्ट चेक एंड जस्ट सी दैट यू आर चूजिंग द प्रॉपर ऑप्शन, ओके चिल्ड्रन। देन यू हैव उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, West Bengal, Sikkim have common frontiers. Common frontiers means इनका they are sharing the border with which country? किस country के साथ they are sharing the border? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार,
वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये सारे राज्य जो हैं दे आर शेयरिंग देयर बाउंड्री विथ नेपाल। ठीक है, चाइना, भूटान, म्यांमार के साथ ऑल ऑफ देम आर नॉट शेयरिंग द बॉर्डर, बट नेपाल के साथ ऑल दीज स्टेट्स आर शेयरिंग द बॉर्डर, सो प्लीज रिमेंबर। ओके, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावाराती, कावाराती अगर आप जा रहे हैं समर वेकेशन में, तो विच यूनियन टेरिटरी आर यू गोइंग टू, कौन सी यूनियन टेरिटरी जा रहे हैं? कावाराती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कैपिटल इज कावाराती। सो पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, दीव एंड दमन नहीं है, इट इज लक्षद्वीप। अब ठीक है, प्लीज मेंशन अबाउट लक्षद्वीप। अब these kind of questions are also there where it is just general questions. Hey, one person is saying my friend hails from a country which does not share land boundary with India. वो कौन सा कंट्री है जिसमें कि द कंट्री इज नॉट शेयरिंग द लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। भूटान इज शेयरिंग द बाउंड्री विथ इंडिया, बांग्लादेश इज देयर, नेपाल इज देयर। तजाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से भी आगे है, सो ताजिकिस्तान इज नॉट शेयरिंग बाउंड्री विथ इंडिया। गॉट इट? सो प्लीज सी एंड चेक कि MCQs when you are solving, you are choosing the correct option. It's really needed, children. Got it? Okay. Which is the group of island lying in the Arabian Sea? We discussed it in the online session, dear students. Yes, it is Lakshadweep. It's Lakshadweep. Name the countries which are larger than India. India से larger कौन कौन सी countries हैं? तो yes, 6 only countries are there. Landforms में Russia, Canada, China, USA, Brazil and Australia. Got it? So these are the countries. Then which island group of India lies to its southeast? Southeast में कौन सा island है? Yes, dear students, in the southeast we have Andaman and Nicobar. Eastern side, yes. Which island countries are our southern neighbors? Southern neighbors हमारे कौन कौन से हैं? Maldives is there and Sri Lanka is there. हाँ, yes, in the chapter also we have done and it is very clear. बहुत आराम से हमको ये समझ में आता है. Another thing, sun rises 2 hours earlier in अरुणाचल प्रदेश. I told you ना, 4 बजे के आसपास अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल धूप हो जाती है. इट्स एब्सोल्युटली, यू कैनॉट, 6 बजे तक तो धूप हो जाती है वहाँ पे. यस, एंड सन सेट्स ऑल्सो बाय 5 o'clock, अंधेरा भी हो जाता है. सन सेट्स ऑल्सो वेरी फास्ट. एंड अब गुजरात है, गुजरात में सन राइजेज लेट एंड सेट्स लेट ऑल्सो. वेस्टर्न साइड है ना, ओके, एंड इन द वेस्ट. लेकिन वॉचेस शो द सेम टाइम. दोनों जगह पे हमारे पास सेम समय ही, द वॉच इज शोइंग द सेम टाइम. दोनों जगह की घड़ी जो है सेम टाइम ही पॉइंट आउट करती है. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हमने देखा है कि इट इज़ 30 from west to east and there would be time lag of 2 hours approximately. ठीक है, 2 hours का टाइम लैग होता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाने में. इस तरह का डिफरेंस, इन दिस काइंड ऑफ अ डिफरेंस इन द लोकल टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड, it is clearly mentioned here. It is because of the Indian Standard Meridian. Indian Standard Meridian has been fixed to give the whole country a uniform time. पूरी कंट्री का टाइम जो है, it should be one. You cannot have 2 times in 2 states and in 2 cities. That is there and that is something very important. We need to understand it, okay? So the standard meridian is observed as the standard time, and because of this reason we find the sun rises 2 hours early compared to Gujarat. यहाँ पे children, the name of Mirzapur is missing. Please mention about Mirzapur also. This is not a complete answer. Complete answer के लिए मिर्ज़ापुर का नाम mention होना ज़रूरी है. Central location of India in the Indian Ocean is a benefit. Yes, Indian Ocean के through we are going to the different parts of the world. We are connected. In the west we are connected to Europe and all the countries that are there in East Asia.
इससे क्या होता है, इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग क्लोज कॉन्टैक्ट, इंडिया हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट के तरफ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट के तरफ से वी आर कनेक्टेड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो ये जो वास्ट कोस्ट लाइन है, okay, the vast coastline that we have, it is one of the longest, and the natural harbor have given India a benefit. हमारा ट्रेडिंग सिस्टम हैपन्स वेरी easily and smoothly with the neighboring countries and distant countries, एंशियंट टाइम से, बहुत पहले से ये होता आ रहा है। तो इंडिया को दे वी हैव बीन गेटिंग अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट से हमारा क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, एंड इंडियन ओशन के जितना बड़ा कोस्ट लाइन नो कंट्री इज हैविंग। गॉट इट? सो these points are clear, these points are given in your book as well. ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, यू कैन टेक इट फ्रॉम द बुक ऑल्सो। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन वी विल बी carrying on with the second chapter in geography. Okay children, thank you so much and all the best to you.